Hello everyone, welcome to my channel. So today we're gonna do another very important case, that is Sukhdev Singh versus Supreme Court. This was the case of 2025. जो ये case था, this was dealing with void marriage. The question arise here was, does the void marriage means no marriage? And if no marriage, does it mean there are no rights? So before doing this case, one must know about what actually the void marriage is and what is the difference between void and voidable marriage. Section 11 of Hindu Marriage Act 1955 deals with void marriage. Section 11 declares it invalid from the start, whereas Section 12 of Hindu Marriage Act deals with voidable marriage, which says it is valid until declared invalid by a court. मतलब जब तक voidable marriage declare नहीं हो जाती कि it's void marriage, until that it is valid. Whereas void marriage के केस में it is void from day one, it is invalid from day one. For instance, if there is already a spouse living, still a person marries the another person, then that is a void marriage. Whereas in case of a marriage which is done under coercion or fraud, किसी के साथ fraud या coercion हुआ है और उसके कारण ही उसने शादी की है, then the person who has suffered can either declare it valid or declare it void. Then option lies to the person who has suffered. So this is the basic difference between void and voidable marriage. सेक्शन 11 में 3 ग्राउंड दिए हुए हैं विच आर डीलिंग विद वॉइड मैरिजेस कि वॉइड मैरिज को हम कब कहेंगे कि दिस मैरिज इज वॉइड. फर्स्ट इज बाइगेमी when there is already a spouse. I already given you the example. Then another is prohibited degree. There are some degree of relationship जो हिंदू मैरिज एक्ट मना करता है कि you can't marry in that degree of relationship. For instance, you can't marry your own uncle. So this is basically a prohibitory decree and you can't marry in it. Next is Spinda relationship. Spinda relationship is not that new relationship. These are the institute which are going from ancient time. हिंदू मैरिज एक्ट के आने से पहले भी स्पिंडा रिलेशन में शादी करना इट इज completely banned. So these all are three grounds which declares a marriage void. Now let's see what happened in this case or what the question was there in that case. So the question came in front of Supreme Court. Can spouse of void marriage under Section 11 of Hindu Marriage Act claim permanent alimony or maintenance under Section 25? So this was the basic question which came in front of Supreme Court. So Supreme Court में इस केस को ऐसे डाइट किया that there was a इसके facts पहले हम देख लेते हैं that there was a husband who has filed petition in the court about to declare his marriage void. उसने डेक्लारेटरी डिक्री के लिए हस्बैंड ने अप्लाई किया और वाइफ ने उस डिक्री में परमानेंट मेंटेनेंस विच वाज एलिमनी एंड मेंटेनेंस पेंडेंटल आइटम विच मीन टेम्परेरी और इंटरी मेंटेनेंस वाइफ ने वो मांग लिया. So now the question here arises, husband said as this marriage is void ab initio, so wife has no right for the maintenance. बट सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 24 एंड 25 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर दोनों तरीके की मेंटेनेंस वाइफ को प्रोवाइड की. बट वाई? क्योंकि सेक्शन 24 में मेंटेनेंस पेंडेंटल राइट का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? द बेसिक ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस अंटिल द केस इज गोइंग ऑन. जब तक केस चल रहा है तब तक के लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दूसरे स्पाउस को प्रोवाइड करवाना जिसके पास फाइनेंशियली सो दैट फेयरली केस रन करे. सो ऑब्जेक्टिव जिसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ही यही है. सो यू कांट से दैट इट्स अ वैलिड इट्स एन इनवैलिड मैरिज. जब तक डिक्री नहीं आ जाती तब तक के लिए वो तब तक के लिए मेंटेनेंस देना पड़ेगा. सो सेक्शन 24 इज नॉट स्पेसिफिक अबाउट डाइवोर्स और जुडिशियल सेपरेशन डिक्री. सो दिस इज द रीजन सेक्शन 24 में मेंटेनेंस दी गई. Maintenance, interim maintenance. Or what about section 25? Why in section 25? Because section 25 may be word used as decree. Decree can be of any type. Either it's of divorce decree, judicial separation decree, or it can even be of void marriage declaratory decree. So सुखबीर सिंह के केस में जो सुप्रीम कोर्ट के केस में यही हुआ कि इन दोनों को देख के इनकी वर्डिंग्स को देख के सेक्शन 24 एंड 25 के और फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट हैज प्रोवाइडेड मेंटेनेंस इवन अंडर सेक्शन 24 एंड 25 बोथ. So this was all about this case. But
एंड में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा दैट यू कांट टेक इट एज अ लैंडमार्क जजमेंट, डोंट कीप इट एज अ लैंडमार्क, सी ऑल द फैक्ट्स एंड देन गिव द जजमेंट। लोअर कोर्ट्स को भी एडवाइस किया कि इसे लैंडमार्क नहीं रखना, हमने फैक्ट्स को देख के ही जजमेंट दिया है और आप भी फैक्ट्स को देख के ही दें। This was all about Sukhdev Singh versus Supreme Court judgment. Thank you. Have a nice day.